Good afternoon, Akash Tiwari. Good afternoon, Vita. Yes, actually, this is my first class in the Vidya Jyoti batches. I was wondering how many people will join, but nobody has joined it except you. So, Akashi, can you give me an idea of like how many people will join usually? Usually, मतलब कितने बच्चे join होते हैं? Just give me a brief idea. Okay. So you can take your time and then you can reply because I think there is some network reception problem or what, I don't know, because I'm not getting your response. So anyhow, we will start the class. So for those people who are looking at me for the first time, let me tell you, my name is Gazala Firdaus and I'm the person responsible for your biology classes. Okay, right. And I'm one of the biology faculty in Avanti. Okay, yeah, great. So, yeah, I hope you have completed your tests and your, test chapters or whatever your conditions were last week. I think you have done that very well, है ना? आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिए है ना सबके सारे tests, ठीक है? And we have given you a good and enough amount of time for you to prepare and attend for the tests, है ना? So we are back after a very long duration. So yes, good afternoon, everyone. Yes, good afternoon, Megha Akamshi. So without any further delay, let's start today's class. Okay. So let me tell you, for the Zoom people, please try to be interactive in the class. And if there are any doubts or whatever your queries are, please make sure that you keep texting or chatting in the chat box. So I will be come to know that you are understanding what I'm teaching. Okay, so I want good responses from you. And also, I want to say for the YouTube people, please you also make sure to be attentive and interactive in the classes. Okay? Yes? Chalo. Great, great. Good afternoon, everyone. Now I can see people are joined. Yes, good afternoon, Sneha, Sonali, Megha, Agamshi. Yeah. Okay. So, great. Yeah, yeah. So before starting today's class, I want to take the technical check. Just let me know if you have any internet issues or if I have any internet issues or if we have any reception problem or audacity. ठीक है ठीक है मेरी आवाज जो ठीक आ रही है या नहीं आ रही है या फिर मेरा बीपी ठीक से दिख रहा है या नहीं. So this is our normal protocol which we usually follow. Just let us know if there are any internet issues. Okay, it will hardly take like 15 to 20 seconds. Just click on yes or no. If I'm perfectly audible, click on yes. And if I'm not audible to you or if screen is not visible to you, then you can click on no. Okay. So I think I'm getting the good responses. That means I'm perfectly audible to you guys. Okay. So without wasting the time, let me end the poll. Great, great. Yeah. Thank you, Sneha. Thank you for the confirmation. Good afternoon, everyone. Okay. Chalo. So based on my information, I have been told that we are doing the chapter biotechnology principles and processes. Okay. So in the last class, you guys have seen what actually the steps have to be undertaken in the biotechnology, right? So there are many steps. So what you did, how you did, what are all the processes, you have completely understood all those, and we are in the end part of those steps. And so we have, prepared the foreign gene product. ठीक है पहले हमने क्या किया था बेटा initially we isolated the DNA material. After the isolation, what we did, we have cut it down the DNA into the minute fragments. है ना छोटे छोटे fragments बना लिए थे उसके बाद हमने क्या था separation of those DNA fragments by the process called as gel electrophoresis. ठीक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हम लोगों ने एडानोस जेल यूज किया था वहां पे बेस्ड ऑन द साइज
and the mass of the DNA fragments, we have separated the small DNA fragments. Okay. After the separation, we have extracted that, and what we did, we made them recombinant. What do you mean by recombinant? There is a vector, we call it as a plasmid. So normal plasmid के अंदर हम लोगों ने अपना gene of interest डाल दिया. Okay, gene of interest is nothing but it is a foreign gene, or you also call it as gene of interest. Why do we call it as gene of interest? Because it is the gene which we want to amplify, and we want to make some material with it or make some protein with it. Okay, that is why we are calling it as gene of interest. Then we have added the gene of interest with the plasmid, and with the enzyme ligase, we have made it recombinant. After making the recombinant DNA, we have to insert that recombinant DNA into the recipient host. है ना? So हम लोगों ने recombinant DNA बना लिया, फिर we have introduced that rDNA or recombinant DNA into the recipient host. After the introduction, we have seen some cases. ठीक है, देखो आप लोग समझ सकते हो, हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो इंसर्ट कर लिया बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन कई बार क्या होता है ना, सारे बैक्टीरिया के अंदर rDNA नहीं जाता. Some of them might not get the plasmid. We call them as non-transformant. Some of them might get the plasmid, but that plasmid is not recombinant. Okay, not recombinant. We call that as, what we call that as. I hope you have seen those three cases. Manjula ma'am have told you that. Okay, so that is non-recombinant transformant. And in some bacteria, you are going to see the transforming has happened, and the DNA we have is the recombinant DNA. So these are the three cases, and then we separated those transformants with the non-transformants, and after that we take the, we take out the bacteria which has the gene, which has the recombinant DNA. फिर उसको हम लोग क्या करेंगे? We allow that to grow in abundant. Then we get the final product. Okay, we call that as foreign gene product. But when we are doing that in a smaller quantity, it is very easy. But for example, we are taking the production of insulin. ठीक है, इंसुलिन देखो अभी हम इतना बनाएंगे तो एक तो बंदे के लिए चल जाएगा. लेकिन if we are talking about for hundreds together of people, we want to make insulin for thousands of people, then we cannot do the production of insulin just in the test tubes or in the beakers or in the petri plates. We want the big reactors for that, or the big systems for that. We call them as the bioreactors. In the bioreactors, what we do? In the bioreactors, जो हम लोगों ने छोटा अमाउंट का इंसुलिन बनाना था, वो सेम चीज को, उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं? वी आर मेकिंग इन द बल्क. वी आर क्रिएटिंग द component or the production of protein or insulin or whatever the component is in the larger amount. ठीक है, अब देखो छोटे छोटे चीजों के साथ तो खेलते नहीं बैठ सकते. We want some bigger amount, a huge quantity of production is needed. That is why bioreactors come into picture. ठीक है, then bioreactors में फिर क्या होता है? That we are going to see today, and then there is a process called as downstreaming. We are going to finish off this chapter today. ठीक है? Okay, great. So now let us answer few questions from your previous classes so that I will know how much you have understood about it. Okay? Chalo. Great. So there is a very basic question on the screen. I want you guys to answer it. Okay? Which of the following enzyme is used in the case of fungus to cause release of DNA along with other macromolecules? Okay, options are lysozyme, cellulase, chitinase, amylase. Okay, I'm going to launch the poll for this question. Please make sure that you answer in the poll, and I'm very happy to see that I'm already getting answers in the chat box, which is a great news. Great. So I have launched the poll. Please make sure to answer the question in the poll. Very good, Sneha Ghosh. I appreciate you have answered your question, me before launching the poll. That's great. It shows how much attentive you guys are.
है ना? Okay, two people have answered. See, I'm not going to give you the all day. You have to understand the question, read the options, and answer as soon as possible. Usually, I give 50 seconds, but let me see how many of you are going to answer within that time. Because now I'm going to give you 60 seconds. Only two people, and let me tell you, it is the very easiest question. Like very easy question. Easy peasy. Okay, chalo, let me end the poll then. Let me end the poll. So, yeah, let me share the results with you. So, among the five people, okay, only two people have answered and they have chosen option C as their answer. Okay, so let me stop sharing and discuss what actually is the answer for this question. Okay, okay, what actually is the answer to this question? See, I told you, right, there are some steps in the isolation and in the entire process of biotechnology. ठीक है, so बहुत सारे processes हैं, उनमें आता है first process, that is isolation. Okay, so which is that first process? The first process we call it as isolation of genetic material. है ना, isolation of genetic material. Now, we can isolate the genetic material from whichever the living organism we want. We can isolate it from the bacteria, from the protozoa, from any prokaryote. Okay, कोई भी हो, like fungi, anything. We can, extract our gene of interest or the genetic material from okay, if we are taking the bacterial cell, then first what we have to do, we have to, go through the bacterial cell wall. Bacteria contains a very thick cell wall. Okay, we call it as murine or peptidoglycan. Murine is composed of NAM and NAM. Okay, you have studied that in your, 11th classes. है ना, आप लोगों ने वहां पे पढ़ा है in the cell biology. Okay, peptidoglycan is made up of N-acetylglucosamine and N-acetyluronic acid, which is the very hardest material. Okay, so bacterial cell wall को first हमको क्या करना है, rupture करके we have to get inside the bacterial cell wall. First we have to rupture the cell wall and then we get inside the pool, that is cytoplasm. There we have the DNA. With that DNA we have to be isolated. So for doing all this, we have to rupture the cell wall, right? So for the bacterial cell, we normally use an enzyme. We call that as lysozyme. कि उस एंजाइम को हम बोल देते हैं lysozyme. And there's an another type of cells. We normally say the plant cells. So normally the plant cell wall is made up of cellulase. Okay, normal component होता है cellulase. So उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं बेटा, हेमिसेलुलेज, पेक्टिन, लिग्निन, स्पेरिन, ठीक है, बहुत सारे होते हैं. But a normal one is called as cellulose. So cellulase के लिए ना एक enzyme है cellulase which degrades the cellulose. Okay, cellulose, hemicellulose, pectin, lignin, बहुत सारे components हैं. So that cellulose is being degraded by the enzyme cellulase. So similarly, there are fungal cells. Okay, so as you know, fungal cell wall or the exoskeleton of fungi is also a very hard material because that is made up of chitin. Okay, the fungal exoskeleton is made up of chitin, and that chitin is usually degraded by the special enzyme. We call it as chitinase. We call it as chitinase. Okay, so this chitinase is the enzyme used to degrade or to cut down the fragments of chitin and then get insert and extract the fungal DNA. Okay, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, which of the following enzyme is used in the case of fungus to cause release of DNA along with the other molecules. So which are the other molecules we have? See, these are all talking about the cell wall. because cell wall के अंदर जब जाएंगे, in the cytoplasm you have the carbohydrates, you have the proteins, you have the amino acids. So proteins के लिए protease use करिए,
न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियस यूज करिए, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए स्पेसिफिक कोई भी एंजाइम यूज करिए। तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स और भी होते हैं, उनको भी डिग्रेड करके at last we have to keep the DNA, because eventually we are isolating the DNA, right? That is our gene of interest. So here in the case of fungi, chitinase is the important enzyme which is used in the fungal extraction. Okay, so if you see the other enzyme, this is used in the bacterial cell wall, this is used in the plant, and amylase. Okay, salivary amylase that is produced in the buccal cavity of the humans, which helps in the digestive system. Okay, now let's move ahead. Right. So during isolation of DNA, addition of which of the following causes precipitation of purified DNA? Okay, this is the question. So options are chilled ethanol, ribonuclease enzyme, DNA polymerase, proteases. Okay, so I'm going to launch the poll now. Please make sure that you answer it quickly, and then we start the today's class. Great, Sneha Ghosh. I'm so happy to see that you are being very interactive. You know, if you guys keep texting, keep interacting with us, then what happens? You'll also feel interested. हाँ भाई हमको सुन रहे हैं, क्योंकि देखो ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप लोगों को हम देख नहीं सकते ना, तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप किस हालत में बैठे हो, कैसे बैठे हो, है ना? So if you are like constantly texting us or sending the responses with us, then we will come to know yes, you are quite interested here and you are quite understanding what we are discussing. Okay, so please make sure that should happen. Okay, so last 15 seconds. Very easy question. It is also easy to you. Okay. Okay, great guys. I have given exactly 1 minute. Now I'm ending the poll and I'm sharing the result. Very good. Very good, Partha. Sonali Partha. Great. Okay. So most of you have chosen the option A as the correct answer. Not most, actually everyone. Everyone में बहुत लोगों ने तो आंसर ही नहीं किया, तो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो. So what they are asking here in the question is very simple. Okay, during the isolation of DNA, as I have told you in the biotechnology, there are many processes, there are many steps. Okay, so in those steps, the first one always is the isolation of DNA, and usually this DNA will be called as foreign DNA or gene of interest. ठीक है, तो इसके isolation में हम लोगों ने क्या किया? We have added something for the precipitation of purified DNA. See, after DNA is present in a cell and that cell obviously contains the cytoplasm, तो हम लोगों ने पहले सेल वॉल को निकाल दिया, साइटोप्लाज्म को निकाल दिया, फिर क्या बचा? फिर बचा डीएनए, तो वो भी हमको प्यूरिफाइड फॉर्म में चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा? उसके लिए हम क्या करेंगे? We are doing what? Okay, that's what your question is. Okay, so for that process, actually to get the purified DNA, that process is called as spooling. Okay, that process is called as spooling. So what actually is the spooling? Spooling is nothing but treatment of that particular cell with chilled ethanol. Okay, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? Treatment कर रहे हैं chilled ethanol to collect the purified DNA. Okay, so this is the treatment with chilled ethanol. Okay, so with chilled ethanol. Okay, so to collect the DNA. Ultimately, our intention is to collect the DNA, but not just the DNA, purified DNA. We want the purified DNA, right? So collect the purified DNA. So this is called as spooling. So in the options, you can definitely see that chilled ethanol or A is the answer for this question. Okay, so you might be asking, now why these are all not the options? See, ribonuclease enzyme. Okay, ribonuclease actually is the enzyme which is used to digest the RNA. ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? आरएनए को डाइजेस्ट करने का एंजाइम है. हम लोगों को देखो आरएनए से कुछ लेना देना नहीं है. वी वांट डीएनए, दैट टू एक्सट्रैक्टेड डीएनए. वी डोंट वांट आवर डीएनए टू बी डैमेज्ड.
एक बार एक्सट्रैक्ट हो गया प्यूरिफाइड फॉर्म में, बाद में देख लेंगे उसको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, सो हमको प्यूरिफाइड फॉर्म में चाहिए था, वो जो हमको मिल गया। देन DNA polymerase. Actually, DNA polymerase is the enzyme which helps in the formation of more and more DNA. You might have studied the replication. So replication में क्या होता है? Usually you have come across the two types of DNA polymerase, DNA polymerase 1 and 3. So DNA polymerase 3 helps in the polymerization. मतलब क्या होता है देखो, NTPs को मतलब एक क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया, एडिनोसिन सॉरी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, फिर साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस सारों को क्या करते जाता है ना, ऐड करके हम लोगों का डीएनए बनता है। अल्टीमेटली वी गेट दैट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट? So polymerization means what? More and more DNA is getting formed. So DNA polymerase 3 does that job, and DNA polymerase 1 does the proofreading. And if there are any spaces in between the DNA fragment, it ligases it or it joins it. Okay? So that is the function of the DNA polymerase, which is really not the function here. So protease means what? These are the enzymes which actually digest the protein. Okay. So I hope I'm clear. Okay. So these questions were really important just to know how your basic knowledge is. Okay. So I was explaining you. Okay, I was explaining you how to obtain the foreign gene product. ये तो हम लोगों को एक प्रोडक्ट चाहिए। हम लोगों को क्या हुआ था, पहले हम लोगों ने फॉरेन जीन ले लिया, अभी फॉरेन जीन को यूज करके हमको एक प्रोडक्ट बनाना है। ओके, सो दैट प्रोडक्ट आई टोल्ड यू इट माइट बी एन इंसुलिन, बट वी कांट मैन्युफैक्चर इंसुलिन इन द स्मॉल बॉटल्स और इन द स्मॉल फैक्ट्री प्लेस। हम लोग छोटा छोटा अमाउंट में नहीं कर सकते बेटा। वी वांट दिस टू बी हेल्पफुल and this should be utilized by the thousands of people. That is why we prepare the insulin in the larger reactors. And these are nothing but the normal vessels. तो क्या होते हैं बेटा, बड़े vessels टाइप का होते हैं। Okay, there actually what happened here, let me read it out for you. These are the vessels in which raw materials are biologically converted into specific products. ठीक है, हम यहाँ पे कुछ यूटिलाइज कर रहे हैं एंड वी आर मेकिंग द प्रोडक्ट्स लाइक एंजाइम्स। ठीक है, सो प्रोडक्ट्स में एंजाइम्स हो गया, प्रोटीन हो गया, so these are the products. So here in the example we are taking the example of insulin. Okay, insulin we are taking. So insulin is very important for the people who are suffering from the diabetes. Okay, so here they are saying raw materials are biologically converted. So which are those raw materials? Here we are using raw materials as any microbial cell like bacterial cell, fungal cell, कोई भी cell, ठीक है, या फिर प्लांट से ले लिया, ह्यूमन से ले लिया, कोई भी डिफरेंट एनिमल से ले लिया। So we are taking the gene of interest or any other particular raw material that is also an living or a microbial, ठीक है, वो जिंदा होना चाहिए, तो वैसा मटेरियल ले लिया। देन so these bioreactors are used to produce larger quantities, as I have told you, like 100 to 1000 liters of culture। मतलब बोलो एक टाइम में 1000 liters का कल्चर बना रहे हैं, बोलो और क्या चाहिए जिंदगी में, है ना? तो इतना अमाउंट ऑफ कल्चर हम लोग बना रहे हैं। सी दिस बायोटेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट्स यू माइट फील लाइक अरे ये तो बहुत छोटा है, क्या है इसमें इतना करा, वहां से डीएनए ले लिया, यहाँ पे मिला लिया, लाइगेज को किया, आरएनए क्या कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने कट कर लिया। तो इतना आसान नहीं होता है बेटा। सी फॉर योर लेवल, फॉर द लाइक प्री यूनिवर्सिटी लेवल, हम लोग बहुत इजी करके सिंप्लीफाई करके आपको समझाते हैं। when you actually go like हाँ मुझे करना है, if I want to prepare an insulin, इतना आसान नहीं है, बहुत सारे मैनुअल एरर्स होते हैं, टेक्निकल इश्यूज होते हैं, बहुत चीजें होती हैं। ठीक है, so that is why whenever you are understanding the biotechnology, have a wider understanding। बस छोटा छोटा समझ लिया ऐसा नहीं, थोड़ा वाइडर अंडरस्टैंडिंग रख के पढ़ोगे तो बहुत आगे तक हेल्प होगा। ठीक है ना? So these bioreactors are providing us something. What are they providing? They're providing us the optimum temperature, optimum pH, मतलब optimum condition बेटा। So आप अगर पूछोगे मैम optimum क्या होता है? Optimum होता है बेटा favorable condition। अगर मैं कहूँ optimum का मतलब होता है favorable, ठीक है? सो फेवरेबल मतलब व्हाट, ना ज्यादा गर्म, ना ज्यादा ठंडा, ना ज्यादा एसिड, ना ज्यादा बेसिक,
मतलब कंप्लीटली यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आराम से फूल फल के बड़ा होगा और ग्रोथ करेगा। ठीक है, मजे से रेप्लिकेशन होगा, मजे से रिप्रोडक्शन होगा, मजे से मल्टीप्लिकेशन होगा, एक से बहुत सारे बैक्टीरिया बनेंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया से बहुत सारा हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो भी बनता रहेगा। तो हम क्या करें यहाँ पे बैक्टीरिया को लग्जरी की लाइफ दे रहे हैं कि तो चलो ग्रो होते जाओ, ग्रो होते जाओ। ठीक है, तो ये काम हम कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमम कंडीशंस टू गेट अवर प्रोडक्ट। हम लोग देखो बैक्टीरिया को अच्छे से जीने करवाना हमारा एम नहीं है। अगर बैक्टीरिया अच्छे से ग्रोथ हुआ एंड रिप्रोड्यूस किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारा भी तो प्रोडक्ट आ रहा है ना। वी वांट आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई सी अल्टीमेटली ह्यूमन इज अ सेल्फिश, व्हाट वी कैन डू। ओके, great. So now don't get scared with the empty slide. So I want you to understand something. तो मुझे आपको क्या समझाना था, देखो, let us understand the basic of the bioreactor. So now bioreactor is a vessel. ये तो हम लोगों को पता चल गया था ना बेटा, it is a vessel. चलो, it is a vessel. Now, so inside this vessel, it might be made up of any steel or iron, मतलब बहुत heavy material में बनाया जाता है, ठीक है? Now, inside this vessel, you are adding some nutrients to grow. Okay, you are adding some nutrients to grow first. देखो, अब आपको यहाँ पे कोई इकोलाई ग्रो करना है या कोई बैक्टीरिया ग्रो करना है, तो आप पहले क्या करोगे बेटा? फर्स्ट यू प्रोवाइड द फूड. वेयर देयर इज अ फूड, देयर इज अ माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म, है ना? तो पहले आप बताओगे न्यूट्रिएंट्स, यू विल ऐड द न्यूट्रिएंट्स. So this nutrient might be in the form of broth. See, in the biotechnology, there are two words you want to understand. One is the solid agar medium. ये एक हो जाता है बेटा सॉलिड अगार मीडियम, एक हो जाता है ओके लिक्विड ब्रॉथ मीडियम, लिक्विड ब्रॉथ मीडियम. सो आप पूछोगे कि मैम लिक्विड ब्रॉथ मीडियम क्या है? लिक्विड ब्रॉथ मीडियम ये है, हियर वी आर यूजिंग द न्यूट्रिएंट इन द लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में यूज हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे सॉलिड में क्या होता है? इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड, देयर इज अ पेट्री प्लेट. ओके, एक पेट्री प्लेट है, उस पेट्री प्लेट के अंदर आप क्या करोगे? यहाँ पे अगारोस अगार अगार को यूज करके एक जेल की लेयर बना दोगे. अगार की जेल की लेयर, इसके ऊपर यू विल अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू ग्रो. सो हियर न्यूट्रिएंट मीडियम इज द सॉलिड. तो यहाँ पे कॉलोनीज बन जाएंगे, बैक्टीरियल कॉलोनीज. सो दिस इज सॉलिड. So what is liquid then? Liquid का very easy है. You can take any test tube or a beaker. Take any test tube or a beaker. So here your material is the liquid material. Okay, यहाँ पे liquid material use कर रहे हो तुम लोग. तो इस लिक्विड मटेरियल में क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म दे डोंट फॉर्म द कॉलोनीज बट दे आर सस्पेंडेड इनसाइड द ब्रॉथ. ओके, सो लिक्विड ब्रॉथ ये है. अब हम जो यहाँ पे बायो रिएक्टर में यूज कर रहे हैं दैट इज लिक्विड. Okay, that is liquid broth. Okay, now the first what had happened, we have provided the nutrients. You might ask me, and what type of nutrients are provided here? You can write like carbon. कार्बन तो बेसिक है ना बेटा, कार्बन तो चाहिए. कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, सोडियम, जो कुछ भी एक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए चाहिए, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स के हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट थिंग इज न्यूट्रिएंट. देन after providing the nutrient, you have to provide a controlling unit for it. Okay, so controlling unit क्या होता है मैम? देखो, अभी ये एक रिएक्टर है, इसके बाजू में मैं एक लगाऊंगी कंट्रोल यूनिट. Okay, so control unit means what? It is, I will write here CU. So CU indicates control unit. You might ask me, ma'am, why there is a need of control unit? Control unit इसलिए चाहिए, we have to control the temperature, pH, how much of the air is has to be sent inside. So CU means nothing but controlling unit. Okay, so we have the controlling unit which actually sense करता है कि रिएक्टर के अंदर क्या हो रहा है. ठीक है, जब सेंस करेगा और हमको इंडिकेट करेगा, देयर माइट बी सम अलार्म लाइक बीप बीप बीप. ओके, सो अब चलो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बीप बीप शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे जो बंदा बैठेगा उसको लगेगा कि हाँ भाई टेम्परेचर तो ज्यादा हो गया, सारे बैक्टीरिया तो थर्मोस्टेबल नहीं है. वी वांट द ऑप्टिमम टेम्परेचर. तो बैक्टीरिया का ऑप्टिमम टेम्परेचर है 30 to 40 और 30 to 60, मतलब कुछ बैक्टीरिया का. तो उसके अंदर ही हमको मेंटेन करना है, मतलब किस टाइप का प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके हिसाब से. ओके, बेस्ड ऑन दैट वी
डिफरेंशिएट द टेम्परेचर, ठीक है, तो वो हो गया। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, यू हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर, यू हैव टू मेंटेन द गुड टेम्परेचर। अब see you have the controlling unit, but controlling unit only senses कि मतलब हाँ भाई ज्यादा है टेम्परेचर कम है। अब यहाँ पे ऑपरेट भी तो करना चाहिए ना। so for the operating there is a jacket called as water jacket। ओके एक वेसल के मतलब अतरफ में एक वाटर जैकेट होता है। ये वाटर जैकेट में क्या होता है बेटा, वी आर सेंडिंग द वाटर, दिस इज कॉल्ड एज वाटर जैकेट। इफ bioreactor needs the heat, then what happen in this water jacket we send the hot water। Okay, if for example the bioreactors want the cold condition, then we send the cold water or chilled water। तब क्या होगा, बायोरिएक्टर में ठंडक पहुंचेगी या गर्मी मिलेगी। so this water jacket is actually helpful in changing the temperature। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट में तो सिर्फ देखो बेटा सेंस करता है। ओके इट ओनली सेंसेस इट। ओके फर्स्ट द टेम्परेचर सेंस करती है, ठीक है। इसके बाद क्या सेंस करना चाहिए, पीएच। देखो some conditions are very important for the growth of a bacteria or any microorganism। one of them is a temperature and pH। अगर pH बहुत एसिडिक या बहुत बेसिक रहा तो वहां पे ग्रो नहीं होंगे माइक्रोऑर्गेनिजम्स। like I would say optimum pH for a growth of bacteria is like 4.6 to 7, मतलब 4 से 7 के बीच में होता है, 4.5 और 4.6 से 7 यूजुअली एसिडिक कंडीशन ही प्रेफर करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो वो हो गया, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इन दिस कंट्रोलिंग यूनिट पीएच इज आल्सो मेंटेन। ओके देन apart from the pH there is also a need of air। what is needed, the sterile air। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थर्ड हमको चाहिए ऑप्टिमम पीएच, उसके बाद हमको क्या चाहिए यहाँ पे एयर। तो आप वो बोलोगे एयर क्यों चाहिए मैम, देखो एयर तो ऑक्सीजन है ना बेटा, ऑक्सीजन। सो बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। चलो अब मैं बोलूंगी कि आप बोलोगे कि मैम एनारोबिक बैक्टीरिया लिया है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ तो एरोबिक भी होगा। तो एरोबिक का भी तो सोच के देखो, तो एयर और इन गैसेस, नॉट जस्ट एयर, इट माइट बी एनी गैसेस। so these are also introduced inside the reactor। so for this we have a special inlet। okay इसलिए हम लोगों ने एक स्पेशल इनलेट लिखा है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका स्टेराइल एयर, ठीक है यहाँ पे। एंड यू आर सेइंग स्टेराइल, मतलब आई एम सेइंग स्टेराइल। तो क्यों स्टेराइल, आप पूछोगे मैम क्यों स्टेराइल एयर लेना है। देखो बेटा अब नॉर्मल एयर डाल दोगे तो एयर में भी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। हमारा तो पूरा बायोरिएक्टर के अंदर जो मटेरियल बना रहे हैं कंटामिनेट हो जाएगा। वी डोंट वांट कंटामिनेशन टू हैपन, वी वांट प्यूरिफाइड प्रोडक्ट टू बी obtained। प्यूरिफाइड प्रोडक्ट चाहिए, कंटामिनेशन होगा तो हम क्या करेंगे उस प्रोडक्ट के, वी डोंट वांट कंटामिनेशन। that is why whatever we are doing it in the sterilized condition। okay so if we are growing the streptococcus bacteria, then we want only streptococcus bacteria to grow। we don't want any staphylococcus staphylococcus or staphylo aureus, वो कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलो स्टेराइल एयर दे दिया। तो अब ये जो करता है ना, दिस विल प्रोवाइड द एयर इन द मीडियम। okay this will provide the air in the medium। now what happened, these are all the conditions are given for the allow of the bacteria। and now you add the inoculum। ठीक है inoculum मतलब क्या होता है बेटा, inoculum is a like a material which you are actually providing for the bioreactor to grow। अब हमारे inoculum में एक बैक्टीरिया है which has the recombinant DNA, उसी से हमारा प्रोडक्ट आएगा like any desired protein और enzyme। तो हमने क्या कर लिया, उसको ऐड कर लिया, ठीक है उसको ऐड कर लिया। एंड अभी उसको हम यहाँ पे अलो कर रहे हैं ग्रो करने के लिए। ओके तो अब क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स हैं, पूरे ऑप्टिमम कंडीशंस हैं, अब हमारा जो बैक्टीरिया है वो अच्छे से ग्रो कर पा रहा है, ठीक है। इतना सब कुछ हो गया। अब मैं कहूंगी नाउ आई विल से, देखो ठीक से यहाँ पे ग्रो नहीं हो रहा। सो ऑल द बैक्टीरिया which are present in the bioreactor, they are not working equally। you know why that is happening here, because there is no homogeneity maintained here। if I say homogeneity that means what, देखो बेटा बायोरिएक्टर के बाजू में जो वाटर जैकेट है
here what happened, it is very near with the water jacket. ठीक है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया है बहुत करीब है वाटर जैकेट के. If there is a constant change of temperature, then the favorable conditions are obtained for this bacteria. Okay, but what about this bacteria जो सेंटर में है? What about this bacteria जो सरफेस में है ना? तो इसलिए सेम टाइप ऑफ ऑप्टिमम कंडीशन हमको सारे बायोरिएक्टर में मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था. दैट इज व्हाई वी हैव इंस्टॉल्ड अ शेकर मतलब व्हाट? शेखर नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेम शेखर. ओके, और इन अदर वर्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज करेंगे हम लोग क्या यूज करेंगे? इम्पेलर. ओके, हम लोग यूज करेंगे इम्पेलर. तो क्या होता है भाई इम्पेलर? तो आपका इम्पेलर, लो इम्पेलर को हमने ड्रॉ कर लिया. तो इम्पेलर में क्या है? इम्पेलर में ब्लेड्स है. ठीक है, these are the blades. So now these blades will help in the shaking of the broth. देखो बेटा, आप कोई नींबू का जूस बना रहे हो, तो नींबू का जूस बनाने के लिए आप शक्कर डाल के पानी डाल के नींबू निचोड़ के बैठ जाओगे ऐसे? नो ना, यू हैव टू शेक दैट. You have to like in the spoon, you have to do it like this. So that job is done by the impeller. Okay, so its name is what? Impeller. Okay, so this impeller has the blades which continuously spin or rotate. So what happened? We are providing the good aeration condition. अभी देखो sterile air आ रहा है, तो air सिर्फ नीचे के बैक्टीरिया के लिए ही सीमित नहीं रहेगा, तो सारी एरियाज में एयर ठीक से डिस्ट्रीब्यूट होगा. Temperature has been constantly maintained in whole bioreactor and the normal pH is maintained in the entire bioreactor. So these blades they rotate and maintain the conditions in the entire bioreactor. Now this is clear. Chalo. So impeller is very important because it is the one which is maintaining the growth of bacterium in the bioreactor constantly everywhere in the every part of the bioreactor. ठीक है, तो स्टेराइल एयर हो गया. अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये तो खुली जगह है ऊपर, यहाँ पे ब्रॉथ के ऊपर खुली जगह है. यहाँ पे हम लोग कई बार स्टीम को यूज कर लेते हैं. ठीक है, सो स्टीम यूज करते हैं ताकि कंटिन्यूअसली स्टेरिलाइजेशन होती रहे. इफ फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंटेमिनेशन का चांस है, हम उसको नहीं दे रहे हैं. वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी चांसेस फॉर कंटेमिनेशन एंड वी आर प्रोवाइडिंग द स्टीम for constant sterilization. We want everything to happen in a sterilized condition. Okay, so constant sterilization is being maintained by providing the steam. Okay, हम लोग ने अच्छा steam दे दिया, तो impeller है. ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ nozzles होते हैं बेटा, यहाँ पे कुछ nozzles होते हैं, ये pH को maintain करता है. ओके, जैसे वाटर जैकेट तो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वैसे हम यहाँ पे either basic or either bases or acids are added. Okay, in this pH kind of part. क्योंकि यहाँ पे मैंने दिखाया ना, ये नॉर्मल सा एक पाइप है, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे. ओ व्हाट हैपेंड? एक सेकेंड. So I think I haven't muted all here. I heard someone speaking. Chalo. So this much is clear to you. So this is about the bioreactor you need to know. Now there is one more part is left which I didn't say. There is a motor here. This is motor. Okay, so this motor helps in the rotating of the impeller. Okay, impeller कितने स्पीड में रोटेट करेगा उसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे भी एक मीटर होता है. मतलब क्या कहते हैं ना, एक वॉच जैसे होता है ना बेटा, उसमें यहाँ पे होता है कितने स्पीड में घूमना है, कितने रेवोल्यूशंस पर मिनट करना है, वो जो भी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ मीटर टाइप होता है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द बायोरिएक्टर यू नीड टू नो. ओके, नाउ लेट अस go to the next slide and understand. Okay, abhi if you look at the first diagram here, so what you see here, okay, it is a bioreactor made up of steel or any big kind of vessel and heavy bottomed vessel. ठीक है, इसमें हम लोगों ने बना लिया. तो अब so now what happened here, we are providing the sterile air. Okay, continuously we are providing the air because oxygen is needed for the growth of the bacteria. Okay, so steam is added for the continuous sterilization. ठीक है, यहाँ पे जो येलो में हम लोग शो कर रहे हैं
This yellow part is the broth, nutrient broth, which has the glucose, phosphorus, potassium, जो भी हम लोगों को चाहिए सब डाल के हम लोगों ने मीडियम बना. Okay, so then we have added the bacterium here. So bacterium तो grow हो ही रहा था. इसके surrounding में एक water jacket होता है, which is not shown in your NCERT, but that doesn't mean there is no water jacket. There is a water jacket, but that is not visible to us. वो हमको usually visible नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि water jacket भी again steel में close हुआ होता है. तो water jacket will be in the outer layer, तो उसके अंदर bioreactor का खजाना होता है, ठीक है. चलो, then so here what happens, steam के लिए फिर यहाँ पे acid and base का pH control के लिए. हाँ, and I forgot one more thing to tell you. So these flat blades help in the rotation of the broth. Now there is another type of blade which are formed above the broth. Above the broth भी एक form एक type का blade होता है. तो वो क्यों होता है, क्योंकि foam create हो जाता है बेटा. When you're constantly shaking something, तो वहां पे कुछ बबल क्रिएट हो जाते हैं, वहां पे कुछ झाग सा क्रिएट हो जाता है. See, if you add a soap powder in the water and then you shake it, then what happens is the formation of foam. So वो foam हमको नहीं बनना है. Okay, we don't want that foam to happen. So वो foam को भी हम क्या कर रहे हैं, eradicate कर रहे हैं with the foam breaker. We are not allowing the formation of foam, क्योंकि हम लोग देखो impeller से constantly shake कर रहे हैं ना nutrient broth को. तो कभी कभार अगर फोम बन जाएगा तो वो भी हम बनने नहीं दे रहे हैं, ठीक है. सो ये इम्पेलर जो है, दिस इम्पेलर, this impeller will run with the motor. Okay, so this is a type of bioreactor. We call it as simple stirred tank bioreactor. Sorry. Chalo. So this is a bioreactor. It is a tank stirred because with the help of impeller we are stirring it. With the help of impeller we are stirring it. So it is a simple stirred tank bioreactor. Okay, so ये हो गया ये. Now this is another type of bioreactor. We call it as sparged still tank bioreactor. Okay. Sorry. So what happened here is, here we are not using the impeller. सेम है बेटा, पूरा सेम बायोरिएक्टर है, बस अंदर के खजाने को हम डिफरेंट तरीके से शेक कर रहे हैं. जो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है, वी आर शेकिंग दैट इन अ डिफरेंट वे. हाउ मैम, हाउ वी आर अलाउइंग इट टू शेक? Here we are not using any impeller. We are providing the air bubbles, no sterile air bubbles. यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या होता है बेटा, ओपन पोर्स होते हैं. There are many pores present here. Through these pores, these air bubbles are pulled into the water. इस सारे water में हम लोग छोड़ देते हैं. So these air bubbles do what? They provide the normal and the adequate condition for the growth of bacteria. मतलब हर जगह पे जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, जहाँ जहाँ पे एयर की जरूरत है, सारी जगह पे स्प्रेड हो जाते हैं एयर बबल्स. बिकॉज air bubbles they definitely move from the bottom to top. है ना, कहीं पे भी एक एयर बबल फॉर्म होता है ना बेटा, कोई भी एक वाटर कॉलम में, इट विल गो फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप. इट विल मेक श्योर. ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे एयर जो है वो ऑब्वियसली बबल्स के रूप में नीचे से ऊपर तक पहुंचेगा ही. ओके, सो दिस इज द स्पार्ज. स्पार्ज मीन्स नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स. ओके, formation of bubbles. So bubble A will be stirred here. Okay, so stirred because here also we are using another type of rod. Okay, यहाँ पे हम लोग another type of rod use कर रहे हैं, but it is not a impeller, it is just a rotator. It is just a rotator. यहाँ से bubbles आएंगे और ये जो चीज है ना, so this plate like a thing, it will rotate. Okay, it's just a one plate, it will rotate. Okay, so here impeller have the flat blades. Here we don't have an impeller, we just have a rotator. So that rotator is very simple in motion, but most of the job is done by the bubbles which are created from this sponge. ठीक है, यहाँ पे जो छोटा है वो बबल
जाने के लिए हम लोगों ने बनाया है, वहां से बबल्स जाएंगे. ओके, so these are the two types of bioreactors which you see in your enzyme. ओके, तो ये दो बायोरिएक्टर्स को आपको याद रखना है. सिंपल स्टेट टैंक बायोरिएक्टर, सेकेंड वन इज फास्ट स्टेट टैंक बायोरिएक्टर. ठीक है. नाउ नाउ आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू नो इज वेरी सिंपल. आप लोगों को क्या जानना है? ठीक है. क्या होता है डाउन स्ट्रीमिंग का प्रोसेस? सो व्हाट एक्चुअली इज अ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस? सो यू माइट आस्क मी, मैम देखो बायोरिएक्टर तो है, बायोरिएक्टर में हम लोगों ने इंसुलिन को प्रोड्यूस कर लिया, तो इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के बाद तो आ गया ना मैम हमारा प्रोडक्ट. नो, we did not get our product. Why? Because we have introduced the recombinant DNA inside the host recipient. जो होस्ट था इकोलाई, उसके अंदर है हमारा अभी भी डीएनए. हम लोग को क्या करना है? वी हैव टू सेपरेट इट, वी हैव टू प्यूरिफाई इट, वी हैव टू ऐड द प्रिजर्वेटिव. अगर वो कोई ड्रग है, ड्रग मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोकेन और एलएसडी, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल लाइक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स. ठीक है, वो हम लोगों को कोई इंसुलिन एक ड्रग बनाना है तो बहुत सारा प्रोसेस करना होता है बेटा. सो व्हाट एक्चुअली इज दैट प्रोसेस, वो हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे. ठीक है. सो बिफोर दैट देयर इज वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन यू. ओके, सो ये जो बायोरिएक्टर है ना बेटा, इन द बायोरिएक्टर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन. यहाँ पे दो टाइप का कुछ फॉर्म होता है. वो क्या है एक्चुअली? देखो बेटा, you have heard the term called as fermentation. I hope you have heard this fermentation. So ये जो fermentation है, you might say मैम ये एक process है जो anaerobic bacteria करते हैं. ठीक है. But in the microbiology or in the biotechnology, we use the fermentation process. We use the fermentation process. That means we are manufacturing something in bulk. ओके, वी आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग इन बल्क, उसको भी हम बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस. ठीक है, मैन्युफैक्चर समथिंग इन बल्क. सो सी आई नो अकॉर्डिंग टू यू एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस क्लासेस यू नो समथिंग. फर्मेंटेशन मीन्स क्या होता है? यहाँ पे इनऑर्गेनिक बोल रहे हैं, एनएरोबिक कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है या कुछ करता है तो उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन. बट यहाँ पे हम लोग इन द बायोटेक्नोलॉजी फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं, वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करता है ना, जो कोई भी ग्लूकोज है उसको यूज करके जैसे अल्कोहल बना लेता है. ओके, ग्लूकोज को यूज करके जैसे अल्कोहल बना लेता है, तो इसको हम फर्मेंटेशन तो बोलते ही हैं. लेकिन ये जो एक बड़े बड़े प्रोसेस हो रहा है ना, एक बड़ा बड़ा बायोरिएक्टर में, उसको भी हम नॉर्मली फर्मेंटेशन प्रोसेस बोल रहे हैं. ओके, मैन्युफैक्चरिंग समथिंग बिग. तो इसके लिए हम बोल रहे हैं बायोरिएक्टर. यूजुअली बायोरिएक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन बायोरिएक्टर. ठीक है, तो वो हम बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, देयर आर एक्चुअली टाइप्स. ठीक है, यहाँ पे टाइप्स हैं कि किस टाइप से हो रहा है फर्मेंटेशन. ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टू टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन आर पॉसिबल. Okay, two types of fermentation are possible. So which is that first type? The first type is called as batch fermentation. Okay, batch fermentation. So what actually is happening in the batch fermentation? See, यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, this is actually a closed system. इसको एक और एक name है, we call it as closed system. Here what happens? Inside the bioreactor, you add everything. बायोरिएक्टर के अंदर न्यूट्रिएंट ब्लॉक है, आप लोगों ने सारा न्यूट्रिएंट्स डाल दिया, कल्चर मीडियम को डाल दिया. ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है ग्रो करने को उसको डाल दिया. ठीक है, बस एक टाइम नहीं आपको इन एंड आउट करना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वंस यू थ्रो एवरीथिंग इनसाइड, यू कैन नॉट रिमूव एनीथिंग. ओके, सो एक बार डाल दिया और एक ही बार रिमूव कर लिया. सो इट इज अ क्लोज सिस्टम. सो all added once and removed at end only once. एक बार ही उसको हम पूरा प्रोसेस होने के बाद निकाल के उसकी प्रोसेसिंग करेंगे. फिर उसको क्या करेंगे? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस. उसको प्रोसेसिंग करके उसका फाइनल प्रोडक्ट निकालेंगे. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का बैच फर्मेंटेशन. मतलब वी आर प्रोड्यूसिंग द
protein of the enzyme in the batches. And second type, second one, we call it as continuous. Okay, we call it as continuous culture system. Continuous culture system. So this system is called as open system. इसको हम बोलते हैं open system. So what actually happened here? Here in the bioreactor, you can add the things. So what you studied new, the simple stirred tank bioreactor, वो आता है continuous culture system में. क्यों? क्योंकि यहाँ पे continuously culture बना रहे हैं, nutrient broth बना रहे हैं, हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं pH के लिए ना, एसिड को ऐड कर रहे हैं, बेस को ऐड कर रहे हैं, स्टेराइल एयर डाल रहे हैं, सब वो डाला, वो निकाला, ये डाला, ये निकाला, डालना निकालना, डालना निकालना करते रहते. सो दिस इज अ ओपन सिस्टम. ओके, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी बेटा, फ्रेश मीडियम इज एडेड. ओके, सो हम लोग ना मीडियम जो ब्रॉथ है हमारा, जो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, उसको भी हम लोग ऐड करके रिमूव करते हैं. ओके, सो फ्रेश मीडियम इज एडेड and remove the used medium. Okay, we remove the used medium. So it is a open system. Okay, so it is a open system. So I hope this is understood for you. So यहाँ पे bioreactors two type के हैं, और उन bioreactors में किस type का fermentation process हो रहा है, या फिर किस type का हम लोगों को product मिल रहा है. ठीक है, कुछ बायोरिएक्टर्स ना एक बार बैच में एक बैच डाला निकाल लिया, ऐसा होता है. कई बार ना कंटिन्यूअसली बैक्टीरिया ग्रो होता रहता है, हम लोग फ्रेश मीडिया डालते हैं जो एग्जॉस्ट होके जिसमें एक्सक्रीटा रहता है ना, अनवांटेड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर गैसेस, उसको सारे हम रिमूव करते हुए, फ्रेश डाला, यूज्ड को रिमूव किया, तो वो ओपन सिस्टम है. ठीक है, सो ये एक मुझे बात बोलना था. नाउ सो जो फर्मेंटर बायो प्रोसेस है, फर्मेंटेशन बायो प्रोसेस है, वो कहाँ पे हो रहा है? देखो यहाँ पे बीच में है ना. सो दिस फर्मेंटर इज नथिंग बट द बायोरिएक्टर. ठीक है, इसको हम बोलते हैं बायोरिएक्टर. सो बायोरिएक्टर इज अ फर्मेंटर, यहाँ पे सब कुछ प्रोसेस हो रहा है. ठीक है, सो दिस बायोरिएक्टर जो प्रोसेस हो रहा है, उसके बीच में इधर और उधर प्रोसेसिंग करते हैं हम लोग. जो प्रोसेसिंग को अपस्ट्रीम कहते हैं. अपस्ट्रीम मीन्स व्हाट? इट इज वेरी सिंपल. When we say upstream, upstream means what? We are using raw materials. We are using materials. Okay, so we are using raw materials for the bioreactor to act. ठीक है, हम लोगों ने क्या लिया? देखो, रेसिपिएंट सेल ले लिया, हम लोगों ने यहाँ पे रेसिपिएंट होस्ट को ले लिया. ओके, रेसिपिएंट होस्ट है, यहाँ पे आरडीएनए है, आरडीएनए है, रेसिपिएंट होस्ट है. ठीक है, फिर हम लोगों ने इसको इंसर्ट किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, फिर हम लोगों ने इसको एक मीडियम में ग्रो करके इसका इनोकुलम बना लिया. मैंने बोला ना इनोकुलम, इनोकुलम मतलब एक लिक्विड मीडियम में हमने इसका इनोकुलम बना लिया. मतलब ये एक मीडियम है बेटा जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है. ठीक है, इनसाइड दिस देयर इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो इस इनोकुलम को हमने बायोरिएक्टर में डाल दिया. ठीक है, इनोकुलम चला गया, यहाँ पे न्यूट्रिएंट ब्रॉथ चला गया, सब लोग हम लोगों को यहाँ पे डाल के देखो, हम लोग सारा यहाँ पे ग्रो करते हैं. दिस इज द प्रोडक्ट बायोसिंथेसिस. यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन गया. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? देखो, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर जो डीएनए है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है. हमने यहाँ पे क्या किया बेटा? इन द बायोरिएक्टर वी हैव जस्ट मल्टीप्लाइड थिंग्स. ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, व्हाट एक्चुअली वी हैव डन, वी हैव मल्टीप्लाइड थिंग्स इन अ लार्जर अमाउंट. ओके, मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट और थिंग्स. मतलब देखो, सिर्फ इतना इंसुलिन नहीं बनाया हमने, इतना इंसुलिन बना दिया. कितना बना लिया? इतना बना दिया इंसुलिन. ठीक है, बहुत सारा. तो हम यहाँ पे चीजों को बढ़ा रहे हैं. तो यहाँ पे सेल था, सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, ऐसे बहुत सेल्स हैं. तो इनको हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, देन इसको एक डब्बे में भर के इसका प्रोडक्ट बनाएंगे, लेबल चिपकाएंगे, प्राइस डालेंगे और मार्केट में बेच देंगे. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीमिंग. सो डाउनस्ट्रीमिंग मीन्स व्हाट? आफ्टर प्रोसेस. जो प्रोसेस के बाद का जो मेंटेनेंस होता है ना, उसको बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस. ठीक है, तो वो हो गया आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. ठीक है, ये हो गया आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लेट अस अंडरस्टैंड इट.
So downstream processing, it is the series of process such as separation, purification of products after the biosynthetic stage. Biosynthetic stage मतलब क्या? Here we are multiplying the product. एक product हमने इंसुलिन इतना नहीं इतना बनाया था, याद है? तो हम लोगों ने बायोसिंथेसिस स्टेज में उसको बहुत सारा मल्टीप्लाई कर लिया ना. The product is formulated with suitable preservatives, ठीक है, एंड क्या कहते हैं, अंडरगो क्लिनिकल ट्रायल्स एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, बहुत कुछ होता है यहाँ. ठीक है, सो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ये सारा होने के बाद हमको मिल जाता है हमारा प्रोडक्ट. ठीक है, सो हमारा प्रोडक्ट उसके बाद मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि क्या क्या होता है. पहले देर इज अ सेपरेशन, वी हैव टू सेपरेट, सो सेपरेशन होता है. फिर क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है ना. सो प्यूरिफिकेशन हो जाता है. आफ्टर प्यूरिफिकेशन क्या होता है, हम लोग सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स डाल देते हैं. ओके, सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं. फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, मतलब एक इंसुलिन बना लिया तो उसको आप मार्केट में नहीं बेच सकते, उसको ट्रायल करना है. उसको 3-4 लोगों के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करके, ट्रायल करके उसको देन यू कैन सेंड इट इन मार्केट. ओके, सो दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज इट इज टेस्टेड. आप लोगों ने किसी एनिमल के ऊपर देखा होगा, इट इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड. ठीक है, कोई रैबिट के ऊपर टेस्ट किया होगा कि हाँ भी इसको कोई स्किन इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो इट इज सेफ फॉर यूज. तो ऐसे कुछ ट्रायल्स आप यूज करने हैं. ठीक है, देन यू नो ये और क्या होता है, क्वालिटी टेस्टिंग. कुछ क्वालिटी में गड़बड़ है या नहीं, तो क्वालिटी टेस्टिंग हो जाता है. ठीक है, तो ये सब कुछ आपको ना देख के चल के करना है. ठीक है, so this is called as downstream process and this process varies from product to product. ओके, तो एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होता है. ठीक है, सो दिस इज इट. नाउ ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है. चेक पर कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, लेकिन टाइम हो गया, मुझे और एक क्लास लेना है. सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. प्लीज मेक श्योर दैट यू आंसर दिस. वी विल डिस्कस दिस टुमारो. ओके, सो टेक केयर एवरीवन. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज वी कैन डिस्कस इट टुमारो, या फिर आप लोग ना ग्रुप में भी मैसेज डाल सकते हो, मैं आंसर करूँ. ठीक है, चलो, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय. So these are your homework, you have to do it. Okay, so I'm not taking any question because there is no time data. I have class from 4 to 5. This is my first time. I'm a little bit lagging in the mic. My name is Ghazala Firdaus. Okay, yes Neha, my name is Ghazala. Ghazala. I'm currently located in Haveri district के GMB में मैं पढ़ा रही हूँ in Karnataka. ठीक है, चलो, bye bye everyone. I'm ending the meeting. Sorry.